Hello students, good morning. Myself Sushila Tulsiani. Today we will learn class 8 science chapter 12 frictions. We might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. We too slow down our bicycle whenever needed by applying brakes. Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied in it. Finally, it stops. So the questions arise why a moving ball on the ground stops after some time? Why do we sleep when we step on a banana peel? Or why is it difficult to walk on a smooth and a wet floor? So in this chapter, I am going to explain you all these answers. First is let's learn what is the difference between the force and the frictions. Force और frictions में क्या फर्क है? Right? So we saw that if we apply the force along the heavy body, right? अगर हम किसी भी heavy body को अगर हम लोग force apply करते हैं, frictions act along on the right. अगर हम heavy body को अगर हम लोग left side में अगर force apply करते हैं, तो right side में एक frictions होता है, एक और force आ जाता है. If we apply the force along the right side, the frictions act along the left directions. In the both cases, the force opposes the motions of the book. The force of the motions always oppose the applied force, right? जो ये force of the friction है वो हमेशा जो applied force है उसके opposite directions में होता है. So frictions always acts on the both surfaces, whether it will be a smooth or it will be rough, whether it will be a heavy body, whether it will be the light body. Now, which factors that affects the frictions? Frictions को कौन से factors affect करते हैं? We will see about that. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Even these surfaces which appear very smooth have a large number of the minute irregularities on them. अगर ये सरफेस हमें बहुत स्मूथ दिखने में आती है फिर भी उसके बीच में माइन्यूट मतलब छोटी से छोटी इरेगुलरिटीज होती ही है. When the right when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome overlocking. राइट अगर हम उसके ऊपर फोर्स करते हैं तो इसके ऊपर एक ओवरकम इसका इंटरलॉकिंग के ओवरकम करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ऑन रफ सरफेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ द इरेगुलरिटीज. अगर रफ सरफेस है तो लार्ज नंबर ऑफ द इरेगुलरिटी होती है. सो द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शंस इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व. सो द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शंस इज द ज़्यादा होते अगर ये रफ सरफेस होते. समझ में आया स्टूडेंट्स? राइट. So by this way we can say that if the surface is the rough, the friction is high, और the surface is the smooth, अगर smooth surface है तो friction जो होता है वो कम होता है. Get it? Now there are the three types of the frictions, right? There are the static friction, sliding friction, and the rolling friction. So we have seen that the force required to overcome the frictions at the instant an object starts moving from the race is the measure of the static frictions, right? अगर कोई चीज़ खड़ी हुई होगी राइट तो उसको अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोई चीज़ अगर ऑलरेडी मूविंग कर रही है राइट उसमें हमें कम फ्रिक्शन होता है. ऐसा क्यों होता है? राइट. So on the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of the sliding friction. So when the box starts sliding, the contact points on the surface, जब अगर force sliding होता है, do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static frictions. And we find it somewhat easier to move the box already in motion than it to get it started. इसलिए कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो उसको
हटाना ज़्यादा इजी होती है कंपेरेटिव जो खड़ी हुई होती है स्टैटिक पोर्शन में होती है. सो बाय दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द टू फ्रिक्शंस, टू टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कंपेयर टू द कोई भी चीज़ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, now we will learn what is the friction or necessary evil means the good effects or the bad effects of the frictions, right? Which are the good effects or which are the bad effects of the frictions. First we will learn about the good friction. Friction अच्छा क्यों है? We cannot write with the pen or the pencil if there were no frictions. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम पेन से या पेंसिल से हम राइट नहीं कर सकते. When our teacher means your teacher is writing with the chalk on the blackboard, right? Its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard, and it could not be happen if there were no frictions between the chalk and the board. अगर चॉक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शंस नहीं होते तो कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट्स पेन से या चॉक से राइट नहीं कर सकते. सो इन शॉर्ट दिस इज द गुड फ्रिक्शन, राइट? सेकंड वन इज द नाउ देयर आर द मेनी क्वेश्चंस, right? Many questions. What will be the happen if there will be the no frictions? अगर frictions नहीं होता तो क्या होता? Means frictions good क्यों है? If an object start moving, it would be never stop if there were no frictions. अगर कोई object moving करना start होता है, अगर friction नहीं होगा तो कभी भी stop होगा ही नहीं. So had there been no frictions between the tires of the automobiles and the road, there could not be start or the stops or turn or to change the directions of the motion. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑटोमोबाइल्स के जो भी व्हीकल्स है वो स्टार्ट नहीं हो सकते, स्टॉप नहीं हो सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. वी कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, राइट, और टाई अ नॉट. अगर हम लोग फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग वॉल के अंदर एक नेल भी नहीं फिक्स कर सकते. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्शन. फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ये सब कार्य होता है, राइट? नाउ वी विल सी अबाउट द बैड फ्रिक्शंस. व्हाट आर द इविल्स अबाउट द फ्रिक्शन, राइट? फ्रिक्शन खराब क्यों है? ओके, चलो. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल too. It wears out the materials, whether they are the screws, ball bearings, or the soles of the shoes. We must have seen that worn out steps of the foot over bridges at the railway stations. Friction can also produces the heat. Friction heat भी produce करता है, right? So for one example is we can vigorously rub our palms together for a few minutes. तो क्या होता है कि हमारे दोनों palm के बीच में heat produce होती है. We might have observed that the jar of the mixer becomes hot when it run and it for a few minutes, right? अगर मिक्सर की जार हमने थोड़ी देर तक मिक्सर को रन किया तो उसमें से भी वो जार जो होता है वो गर्म हो जाता है, right? So these are the bad effects of the frictions. Now how can we increase or decrease the frictions? हम frictions को increase या decrease कैसे कर सकते हैं, right? How can we increase or decrease the frictions? First we will learn about the how can we increase the frictions. Have you ever thought why the sole of our shoes is glued? हमारे shoes के soles जो होते हैं glued क्यों होते हैं, right? It is done to provide the shoes better grip on the floor. तो हम लोग स्लीप नहीं हो सकते. So you can move safely. Similarly, the threaded tires of the car or the trucks and the bullock cars provides the better grip with the ground, right? Grounds में उसमें ज़्यादा grip आती है. So it is we deliberately increase the frictions by using the brake pads on the brake system of the bicycles and automobiles, right? Now how can we decrease the frictions? हम लोग फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? आपने कैरम बोर्ड के ऊपर ऐसे पाउडर को कभी स्प्रिंकल किया होगा या तो घर पे पेरेंट्स को देखा होगा ऑयल को अप्लाई करते हुए. दरवाजे में अगर आवाज़ आती है तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा ऑयल को अप्लाई करते हुए. सो in some substance, however, the friction is undesirable and we would
want to minimize it. So why do this we sprinkle the fine powder on the carom board, right? हम लोग fine powder, a bicycle and a motor machine uses the grease between the moving parts of the machines. In all above cases, we want to reduce the frictions in order to increase the efficiency. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of the machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. जो moving body होती है वो directly rub नहीं हो सकती. And increase smooth. The substance which reduce the frictions are called the lubricant. जो substance जो frictions को reduce करते हैं उसको क्या कहा जाता है? Lubricant कहा जाता है. Right? Now we will learn about the third type of the frictions, that is the rolling friction. What is the rolling frictions? Okay, when one body rolls over the surface of the another body, the resistance to its motion is called the rolling frictions. एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल होती है तो जो रेजिस्टेंस और जो मोशन का होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by the rolling by the use of the ball bearings. Common examples are the use of the ball bearings between the hubs and the axles of the ceiling fans and the bicycle. Right? इसको रोलिंग फ्रिक्शंस को मूविंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शंस कम होता है, इसलिए आजकल फैन है, बाइसिकल है, सभी में बॉल बेयरिंग्स डाला जाता है. Okay, so this is about our chapter of the frictions. Hope you understand this chapter properly. Thank you. Have a nice day.